we'll talk cell, the unit of life. As you all know that all living organisms are made up of cell, and this is called as the basic unit of life. So all organisms are composed of cells, some composed of single cell, and those are called as unicellular organism, while some are composed of many cells, and these are called multicellular organism. Multicellular organism means they are made up of many cells, like different cells, like us. What is cell? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. Means cell is unicellular. When many cells combine, they will form multiple cells, tissues, and tissues will form organ will form the organism. So single cell will combine and form multiple cell, and cell is a unicellular organism which is capable of independent existence, can stay independent, and also perform many essential functions, like some cell performing functions of division, some which helps in a cell division, some perform different functions. So anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Cell is a structural and fundamental and functional unit of living organism, because our, like in animal and plants. So for example, let's take an example of human being. So our body is made up of cells, because cells combine, they form tissue form the organism. So fundamental unit, because cell is the backbone, and the structure, because it, there are different kind of cells are present. Some are in oval shape, some are in polygonal, some are in ovoid, and different. And functional unit, because it perform many functions, like I tell you about cell division, some perform cell division and many functions also. There was a scientist, that is Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek was the first scientist who first saw and described the live cell. So he was the first who saw and described the live cell, like live cell, not dead cell. Discovery of first dead cell was done by Robert Hooke in 1665, but the first living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek. And this invention is done because there was a microscope and the improvement. Anton von Leeuwenhoek done this with the help of electron microscope, because of this. Now we'll talk about the cell theory. Cell theory. In 1838, there was a scientist, that is Skeldon. He's a German botanist. He examined a large number of plants, and observed that all the plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of a plant. So as I told you, there is a single cell, and many single cell will combine, they form multiple cells, and multiple cell will form the tissues will form the organ, and organ will form the whole organism. Like same as here in plants, what happened, the large number of plants Skeldon observed, and he found that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. And at about the same, after Skeldon, there was another scientist, that is Schwann. And Schwann in 1839 is a British zoologist who studied the different kinds of animal cells. Like we studied that Skeldon studied about the plant cell, and Schwann was a scientist who studied different type of animal cells. And he find out that the cell consists of thin outer layer. We have a cell, we've already familiar in our small classes, that there is a cell, and in cell there is a plasma membrane which is formed. So that discovery was done by the Schwann. So he found that the cells had a thin outer layer which is today is known as the plasma membrane. And Schwann also concluded that in
plant tissues. Like in animal cell there is a presence of plasma membrane. Similarly, in plant cells there is a presence of cell wall. Schwann also concluded this thing. And Schwann proposed, on this basis, he proposed a hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. Means our body is made up of cells. Very small cell perform the different functions. Sheldon and Schwann together formulated the cell theory. Means the cell theory was given by Sheldon and Schwann. This theory, however, did not explain how the new cell were formed. But this cell theory was not explain how the cell division occurred. I mean, they were not able to explain about the cytokinesis, how the cell division occurred. Then there was a scientist, that is the Rudolf Virchow. So there was a scientist, that is a Rudolf Virchow, in 1855 first explained that the cell divided and new cells are formed from pre-existing cell. So he was a scientist, Rudolf Virchow, in 1855 explained that there was a cytokinesis, मतलब सेल डिवाइड करते हैं और उनसे नए सेल फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से. ओमनी सेलुला ई सेलुला सेल डिवाइड करते हैं और उनसे क्या है, नए सेल्स बनते हैं. तो जो नए सेल्स बनते हैं वो तो पिछले सेल से बनते, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते, राइट. He modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give the cell theory. उन्होंने उनकी थ्योरी को ही देखा और उसे मॉडिफाई किया था. सेल थ्योरी हमें क्या बताती है? Today's that all living organisms are composed of cells and product of cell. जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए? सेल से, और प्रोडक्ट किसका है? सेल का ही है. एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब हर एक सेल जो है पिछले सेल से बना है. अब हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल. नाउ विल स्टडी द सेल का ओवरव्यू पढ़ेंगे. सेल क्या है, कैसा दिखता है और किस तरह के सेल्स होते हैं. ठीक है. सो हियर विल स्टडी कि जो सेल्स होते हैं, आप फैमिलियर होंगे प्लांट सेल से और टिपिकल एनिमल सेल से. सो व्हाट इज हियर विल डिस्कस. अगर हम बात करें ह्यूमन चिक सेल्स की, तो हम वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. ओके, तो जो प्लांट सेल होते हैं और जो एनिमल सेल होते हैं उन दोनों में ही एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज द न्यूक्लियस. जो ये न्यूक्लियस है वो क्या क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल. मतलब पहले न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं? जेनेटिक मटीरियल, और जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है डीएनए में. ठीक है. द सेल्स हैव मेम्ब्रेन. Cells that have membrane bound nuclei are called यूकैरियोटिक. मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया. और जिनमें नहीं होती है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देयर इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म. मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. ठीक है. मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उसके साथ में क्या होगा? सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म होता है ये, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत सारे कुछ प्रेजेंट भी होते हैं. विल डिस्कस इट ऑल्सो. उससे पहले न्यूक्लियस के अलावा जो है यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट. रिमेंबर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. उन्हें क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनेलीज. लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड मेनी मोर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एक्सेट्रा. तो ये सारी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है. बट प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. प्रोकैरियोटिक सेल्स में इतनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है. And ribosomes are non-membrane bound organelle found in all cell.
जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, बट एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स में फाउंड होता है, मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm